Lal sir, I have blockage in my heart. After chest pain, Max Hospital suggested and done angioplasty. They are asking to one another stain to remove 85% blockage. So I have seen your specialized Kumbhak therapy and I'm interested for that. Oh. Okay, what does blockages mean? आपने कभी पौधों में पानी दिया? Have you watered plant through a pipe? So if you have to increase the pressure of water, and the pressure of water is not that much, आपको पानी दूर फेंकना है, क्या करते हैं आप? You press the nozzle of the pipe, isn't it? आप जो पाइप का आगे का हिस्सा उसको दबाते हैं ना, बंद कर जगह कम करते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है, राइट? इसका मतलब आपका हार्ट में प्रेशर चाहिए उसको पंप करने के लिए. फॉर द एक्शन योर हार्ट नीड्स प्रेशर. सपोज the strength of your heart, or something what we call as Dakshinagni, has become weak. How will the heart function? Because heart has to function, the body has to survive somehow. So pressure create कैसे करेगा आपका heart? By creating blockages. Do you know, in the teens, जो टीनेज होती है ना, उसमें अगर आपका हार्ट ब्लॉक नहीं क्रिएट करता है, if your heart doesn't create blocks, a person may not survive beyond 30. 30 के बाद वो survive ही नहीं करता. So creating blocks is basically a survival mechanism of your body. The second thing is angioplasty कर दिया, but your body does bypass, natural bypass also. अगर आप अपने शरीर पे थोड़ा काम करें, थोड़ा इसका वो हेल्थ फैक्टर बढ़ा दें, जोर लगाने की क्षमता बढ़ा दें, if required, your heart will do natural bypass. केवल आपको इतना ही करना पड़ेगा. You'll have to bear a little pain for 3-4 weeks. वो तो चलेगा ही. आप even though angioplasty is done, your pain will continue for that amount of time. But operate कर दिया तो तसल्ली मिल जाती है. There is actually there is enough proof in the modern research that angioplasty is not the right thing to be done. अब मैं इसको अगर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं, इट इज कंप्लीटली अनसाइंटिफिक, तो क्या कहेंगे? नाउ वन एंजियोप्लास्टी, क्या दूसरा नहीं होगा? या डॉक्टर ने बोला एक के बाद दूसरा नहीं होगा, क्योंकि आपका वो दक्षिणाग्नि तो बढ़ाया ही नहीं. एक ब्लॉक होगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, बिकॉज योर हार्ट इज वीक and the heart is trying to survive. तो उसकी शक्ति अगर नहीं बढ़ाते आप, तो blockages तो बहुत सारे होते हैं. Is that a solution? No, it is not a solution. So how to clear a block of your sink, kitchen sink? किचन के सिंक में ब्लॉक हो गया तो कैसे क्लियर करेंगे? थोड़ा प्रेशर लगाएंगे ना. जब इंटरनल प्रेशर आप लगाते हैं तो आपकी नॉट ओनली ब्लॉकेजेस बट लॉट ऑफ क्लियरिंग, आपके लिम्फेटिक सिस्टम का क्लीन, टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं बॉडी में, और हमेशा होते रहते हैं. तो वो अंदर से आप इसको क्लियरिंग करेंगे, ब्लॉकेजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द हेल्थ फैक्टर विल इंप्रूव, द हेल्थ पैरामीटर्स विल इंप्रूव, द फोर्सेस ऑफ योर बॉडी, द ऑर्गन फंक्शनिंग विल इंप्रूव. सो द बॉडी विल नॉट नीड अ सपोर्ट ऑफ अ ब्लॉक. तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होने के संभावना कम हो जाएगी. विल ऑल्सो टेल यू अ लिटिल लाइफस्टाइल सजेशन which will help in your life later on. तो अगर आपको उससे निकलना है तो will not say कि आप दवाई ना लो, ये मत करो, वो मत करो, जो करना है करो, but improve your systemic functioning and health factors. इसको जरूर improve करें, and it will only help you come out of problem permanently. Rest of the things are quick fix. थोड़ा मैनेज कर लिया थोड़े टाइम के, बट थोड़ा मैनेज करके रख लिया तो वो तो क्रिमिनल्स को हम रखते हैं. दिस बॉडी इज नॉट अ क्रिमिनल. डोंट ट्राई टू मैनेज इट एंड कीप इट थ्रू आउट लाइफ. है ना, इसको क्रिमिनल नहीं बनाना है. सो इसको ऐसा बनाना है जैसे आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए. यू लिव विदाउट अ प्रॉब्लम. Okay, the next question is from Supriya ma'am. I'm having lower back pain since 9 years and shoulder pain since 5 years. I feel stiffness, fatigue and very less stamina. I can't stand for more than 10 minutes. Root cause of pain is not getting diagnosed. Can Kumbhak therapy help?
Yes, yes, yes. That is why we are saying the kind of diagnosis which is being done is not even diagnosis. अगर आपके शरीर में ये पता लगाया कि अरे बाबा आपके शरीर में तो कैल्शियम कम है, but it's just an observation. Why calcium is less? Nobody knows. किसी को मालूम नहीं. हाँ, शुगर आपका बढ़ा हुआ है, पर शुगर क्यों बढ़ा हुआ है किसी को एक्चुअली मालूम नहीं. So modern diagnosis is not diagnosis, it is observation. आप ध्यान से देखें तो स्कैन करते हैं, कैट स्कैन, रैट स्कैन, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना. इट इज नॉट गिविंग यू सोल्यूशन. उससे थोड़ी पता लग रहा है क्यों. Through the what you call as modern diagnosis or allopathic diagnosis, nobody knows why it is happening. कोई जानता ही नहीं कि क्यों हो रहा. ठीक है ना, आइडिया लगा रहे हैं क्यों हो रहा. अगर आइडिया सही होता, अगर if the idea would have been correct, तो हम ज्यादा हेल्दी होते ना. In the last 50 years, the human health has deteriorated like rampantly, drastically. 100 साल पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी. किसी को हार्ट डिजीज नहीं था, किसी को डायबिटीज नहीं था, थायराइड इशू नहीं था. आज कैसे होगा? इफ आवर आइडियाज आर करेक्ट, अगर हमारे आइडियाज सही हैं, जो कि आजकल एलोपैथी लगा रहा है आइडिया कि अच्छा ये तो है, ये है, ये तो ये है, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. बट व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? उसमें वो क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम. मालूम ही नहीं. सो आज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सबको हो रहा है. 50 साल पहले किसी को भी नहीं था. 100 साल पहले किसी को भी सोचा भी नहीं था. So our ideas are creating problem. They are not correct. वो सच नहीं है. अगर सच होते तो हम हेल्दी होते. So I can describe this in so many different ways, but again I'll be talking something which you are not trained into, technical word. आपको अब जैसे समान पक्ष, आपके बॉडी का एक पक्ष होता है, समान एक स्ट्रेंथ होता है. It is called as समान. Now it creates something called as heat in the body. It creates your metabolic strength. आपका metabolic strength क्या create करता है? समाना. Samana creates metabolic strength. It creates heat in the body. If there is proper heat in the body, proper metabolism, your joints will be flexible. किसी चीज में गरम कर दीजिए उसके, you have stiff joints, उसको थोड़ा गरम कर दो, देखो वो नरम हो जाता है, होता है ना. So what have you lost? क्या चीज कम हो गई आपके शरीर के अंदर? समान पक्ष वीक हो गया. Now, if you improve the samana paksha, you will regain your metabolic strength. You will regain your metabolic factor, and thereby you'll see there are two kind of sharira. One is a pramana sharira, the other is sankhya sharira. ये दोनों का robustness होता तब. So वो जैसे ही होगा, जैसे ही आप कुंभक करेंगे, what is the first thing that you'll see? If there are certain stiff joints, you do Ashtanga Chikitsa. Immediately, the first day you'll feel relief. The moment you do Ashtanga Chikitsa, उसको करने के बाद ही relief मिल जाएगा. But वो फिर stiff हो जाएगा, because the problem, the Samana Paksha needs a certain amount of time to gain that kind of robustness. So people who are into Hatha Yoga practices, postures में जाते हैं ना, the moment they do kumbhak and then go into postures, they find going into the posture is pretty easy. यानी उनकी flexibility just by kumbhak बढ़ गया. So this is what you will see. Your flexibility of joints will improve, your metabolic factor will improve, and thereby you'll see lot of relief. बहुत आराम आ जाएगा, जो कि दवाई खा के थोड़ी थोड़ी देर के लिए आराम लेते हैं, but it again creates a difficult state for the body to recover. आपकी दवाइयां आपको रिकवर नहीं करने देना चाहती, करने नहीं देती वो, basically, because the body is not designed for chemicals. You put chemical bomb inside, अपने अंदर केमिकल बॉम्ब डालते हैं ना, कितने दिन क्यों आप इतने प्रॉब्लम में आ गए? बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड यू हैव पुट इन केमिकल बॉम्ब्स इन द बॉडी. जमीन पे केमिकल डाला, जमीन खराब हो गई ना. नाउ वी आर सेइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करो. शरीर पे भी तो कितना बॉम्ब डाला आपने, केमिकल डाला. इसकी जैविक खेती कब शुरू करना है? समवेयर यू विल हैव टू स्टार्ट, बट you will have to create the basic strength of this body to come out of medication. Otherwise, there is no option. Okay.
Katharina ma'am. Katharina ma'am says, I have sciatica and cervical spondylitis, knee pain, left side is very weak, can't sleep to the left or right side. I start getting pain. I have arthritis of jaw too, which affects the ears. How long will it take to heal? It's there from last 7 years. So you are facing a problem from the last 7 years, and before that, you have created it over few decades. आपने 20-30 साल कुछ प्रॉब्लम किया, तो ये लास्ट 7 ईयर में योर बॉडी स्टार्टेड शोइंग इट अप. सो एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं. 25 years, let's take 25 years. You created a problem in 25 years on getting the difficulty. How much time do you think your body will take to revive? Because your body has been weakened over 25 years. 25 साल तक अगर आपको टॉर्चर किया जाए, तो आपको रिवाइव करने में, उससे वापस आने में कितना समय लग सकता है? Don't you think you need another 25 years? But because we are working upon the body specifically with our effort, you might come out in 6 months. For many people, they'll come out in 6 months. But suppose you come out in 3 years. Isn't it a good deal? अगर आप 3 साल में भी निकल जाते, तो isn't it a good deal? So I'm saying 100% guaranteed आप निकल जाएंगे. The time will depend upon the status of your body, how much strength you have lost, what factors have become imbalanced, how much rhythm you have lost of this system. Time will depend on that. But one thing is for sure, you will recover. Now, is it a bad deal? क्या ये गलत है? And I'm telling you, you'll not recover by any other method. Even if you go for long-term naturopathy and Ayurvedic treatment, अगर आपको उससे फायदा भी होता, but you will not regain the strength of the factors which have been lost. वो gain करने के लिए you will have to make effort. There is no other way. So do whatever, but this is the first priority. That the body is like a, आपका शरीर क्या है? मूक प्राणी, can't talk. It shows symptom only. So it is looking at you and telling you that please help me. So उसको recover करना सबकी जिम्मेदारी सबसे पहली है. Then whatever else you do is secondary. तो ये जरूर करें and you will come out for sure. And now the next question. Can autoimmune disease like psoriasis be cured? Renu ma'am is asking. See, autoimmune disorder is easily curable. ठीक है, ये मैंने आपको बताया, autoimmune disorder is easily curable. But the impact of autoimmune disorder, if it has reached your skin, अगर skin तक आ गया, organ तक आ गया, the organ might take more time to actually revive, or sometimes skin takes very, very long time. But आपको अगर प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो व्हाट इज द इश्यू? अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाए, आपके बॉडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, देयर इज सर्टेन डिफॉर्मिटी एनीवे. क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा ना आपको. सो वन थिंग, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैन बी 100% बी क्योर. फॉर दैट you will have to actually, let's not get into the explanatory part of that. We have explained it at so many places. Once you join the program, we'll share many videos with you also, where you can actually get the mechanics of how it is done. But don't expect or don't create an idea in your mind that autoimmune disorder is like 10 points or 10 points, 10 points ही रहता है. Maybe in the afternoon you have the autoimmune disorder has increased to a little pitch, or evening में वो नीचे आ गया. There is no autoimmune disorder. Your body is a dynamic entity. Your sugar level doesn't remain same. Your blood pressure doesn't remain same. Your thyroid levels doesn't remain same. एक घंटे बाद दोबारा टेस्ट करो, चेंज हो जाता है. But you create an idea, अरे मेरा TSH level तो ये है,
अरे मेरा ब्लड प्रेशर तो ये है, अब ब्लड प्रेशर 1 मिनट बाद में अलग आ गया होगा, 5 मिनट बाद में चेंज हो गया। Your body is a dynamic entity. Don't create an idea that I have autoimmune disorder. No, maybe when you are when you have little more stress and mentally you are not feeling fine, that time your body is trying to protect itself. Immunity high क्यों होगा? To protect you. So you are creating risk in the body. If you low down the risk in the body, autoimmune, why will the body increase the immunity factor? नहीं, वो तो रिस्क बढ़ गया तो इम्यूनिटी बढ़ा रहा है. And one of the reasons why people are getting into autoimmune disorder is too much intake of chemicals, because chemicals are risk for the body. The kind of food that we are eating, genetically modified food, the kind of environment we have created. तो ये सब वो बुद्धिमान लोग हैं ना जो फिरंगी हैं, उन सब का काम है कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं. हाँ, उनको हम बुद्धिमान समझते हैं. तो कम से कम we'll have to think out of the whatever narrative has been created. उससे निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तभी ये ठीक सोल्यूशन मिलेगा. अदरवाइज ये तो बढ़ती ही जाएंगी चीजें, है ना. रिड्यूस द रिस्क, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विल ईज डाउन वेरी इजीली. बहुत आसान है. अपने बच्चे के साथ में डांस कर लो, आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक. You're not singing, you're not dancing, you're not celebrating. Your body is trying to protect you thereby. नहीं? So yes, autoimmune disorder can easily be taken care if you reduce the risk. That's what we are